Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, today we are going to conduct a lecture of software design. Previously, we have covered the lecture of agile-driven process development and system development life cycle. And before that, we have covered the lecture of requirements engineering process, which was part of the analysis phase. Today, we are going to discuss a few things about the analysis phase and few the remaining issues related to the design phase and what are the part of the design phase. Okay, so let's just start. Bismillahirrahmanirrahim. Importance of design. Why not go straight to implementation? Once we have gathered all the requirements, we can just start coding, but there's a gap between the coding and between the analysis and requirements gathering. Same way, when you want to construct a building, for that purpose you have gathered the requirements कि भाई जो है वो किस तरह की रिक्वायरमेंट है, कितने फ्लोर होना चाहिए, कितनी उसकी मेजरमेंट होनी चाहिए. So you wrote it down on the paper before going into the production and construction of the building, you build a model. ठीक है, एक्चुअल स्मॉल लेवल मॉडल जो कि आप क्लाइंट को दिखाते हैं कि योर बिल्डिंग विल लुक लाइक दिस. ठीक है, and everything you thought of that you put it into the model, whether graphically or whether the physical model. So after getting the requirements, after the analysis and before going to production, in between that you design everything on the paper, you design everything on the computer. Okay, this kind of system will be developed into the real environment. Same way, we do not jump directly towards the implementation. We also need to consider the impact of non-functional requirements, and the system must be adapted to the implementation environment. So let me just go through a quick review from about what are the functional requirements and non-functional requirements. Functional requirements and non-functional requirements, they are gathered during the phase of requirements elicitation, which is the first activity of the requirement engineering process. Please refer to the requirements engineering chapter in which I have discussed about the requirements elicitation. The functional requirements will be how the system will behave. Like over on the top you can see the functional requirements in which we have mentioned new vehicle management. So for the new vehicle management, the system will allow managers to view the current new vehicle inventory. The system will allow the new vehicle manager to place orders for the new vehicles. The system will record the addition of new vehicles to inventory when they are received from the manufacturers. So this is the functional requirement. Again, same way for the vehicle sales management, for the used vehicle management. For non-functional requirement, we will have the system that will be the requirement that will be used as a support or an extra to encapsulate the system regarding the extra requirement. For example, operational, the system should run on tablet PCs to be used by a salesperson. The system should interface with the shop management system. The system should connect to printers wirelessly. You have a performance related requirement. System should support a sales staff 15 salesperson. You have a security. No salesperson can access any other salesperson's customer contacts. कोई एक सेल्सपर्सन किसी और का कॉन्टैक्ट एक्सेस नहीं कर सकता. कल्चरल एंड पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स. कंपनी पॉलिसी से दैट ऑल कंप्यूटर इक्विपमेंट इज परचेज फ्रॉम डेल के डेल से लेना चाहिए. ये हमारी जो कल्चरल या पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है. कस्टमर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड इन कंप्लायंस विद द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट. सिस्टम विल कंफर्म टू द स्टेट्स लेमन लॉ. या फॉर एग्जांपल कि आप the system is being used in America, then the system will show कि कौन सी करेंसी है, डॉलर की करेंसी है. अगर सिस्टम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है यूरोप के अंदर, तो कौन सी करेंसी यूज़ होगी, यूरो करेंसी यूज़ होगी. तो these all नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स will also be part of your requirements gathering in addition to functional requirements कि वो किस तरह सिस्टम बिहेव करेगा. ठीक है, so we need to consider the impact of non-functional requirements. The system must be adapted to the implementation environment. The analysis model is not sufficiently formal, so we need to refine analysis classes, determine operations, determine how classes should communicate. Analysis model will contain आपके use case diagrams होंगे, आपके जो है वो activity diagrams होंगी, आपके जो state diagrams होंगे. So these things will be the part of your analysis model. You will learn more about this diagram into your introduction to software development
course in which it contains the practical lab work as well. ठीक है, in this lecture, in this subject you don't have the practical work, otherwise we would have been doing the these UML modeling as well. So वो जो आपके जो है वो activity diagrams, state diagram, they must be part of the analysis model, but they are not sufficiently formal, they are more abstract point of view. So we want to validate the analysis results. Now how well do the analysis model and requirements model describe the system? What is not yet? When we talk about the analysis model and when we talk about the requirements model, there is no particular model, but it comprises of several models itself. ठीक है, ताकि आपके जिस तरह यूज केस डायग्राम है आपके पास, हम देखेंगे इस लेक्चर के एंड में, स्टेट डायग्राम्स हैं आपके पास, जो रिक्वायरमेंट सोलिसिटेशन, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, you have like observation, you have support, so everything that comes into the requirements model. Requirements model means it contains the list of activities to be done during the requirements gathering. So again, बात का ये कि we do not go directly jump into the implementation, but we design first. अरे डिफरेंट लेवल के किस तरह के सिस्टम हम डिज़ाइन करेंगे, बनाएंगे, जिस तरह हम मॉडल बनाते हैं पहले, ठीक है. So in real world, in real software environment, I don't remember that I have discussed with you these things कि किस तरह से जो है सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर काम होता है. तो सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर आपके पास एनालिसिस होता है जिसमें आप ये सारी जो है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करते हो. एनालिसिस गैदरिंग करने के बाद फिर आप डिज़ाइन करते हो. उस डिज़ाइन के अंदर आपके पास आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर्स होते हैं, आपके पास कंपोनेंट डिज़ाइनर्स होते हैं, आपके पास इंटरफेस डिज़ाइनर्स होते हैं. अब इंटरफेस डिज़ाइनर, आर्किटेक्चरल कंपोनेंट डिज़ाइनर्स हम आगे चल के इस लेक्चर में देखेंगे. लेकिन इंटरफेस डिज़ाइन, यू आर फेमिलियर विद इंटरफेस. जिस तरह आपका वेब है तो वेबसाइट पे आपका इंटरफेस डिज़ाइन होता है HTML CSS के साथ. आपका डेस्कटॉप है तो आपको जावा में या .NET में आपका डिज़ाइन होता है. आपके पास फ़ोन होता है या टैबलेट होता है तो आपको एंड्रॉयड जो है, जो कॉटलैंड है या जावा के अंदर, या जो है iOS पे जो है आप इस्तेमाल करते हो C++ के प्लेटफॉर्म पे, तो वो इंटरफेस आप डिज़ाइन करते हो. लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस डिज़ाइनर्स एंड इंटरफेस डेवलपर्स. इंटरफेस डिज़ाइनर्स वो होते हैं जो कि लेआउट डिज़ाइन करते हैं, इस तरह से आपकी जो है वो वेबसाइट दिखेगी, विच इज़ नॉट फंक्शनल. मतलब फोटोशॉप पे वो डिज़ाइन करेंगे भी, आपके मोबाइल फ़ोन में इस तरह से वो चीज़ दिखनी चाहिए, ठीक है. फिर आपके लॉजिक डिज़ाइनर्स होते हैं. लॉजिक डिज़ाइनर्स दे राइट द एल्गोरिथम्स ड्राइव्ड फ्रॉम द एनालिसिस फेज मॉडल्स, कि वो एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे. भाई अगर ये आपके पास इंटरफेस और इंटरफेस पे इस टेक्स्ट बॉक्स पे कौन सी कोड होगा, वो उसका एल्गोरिथम लिखेंगे एज एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू. इस बटन पे क्या परफॉर्म होगा, जब यूज़र क्लिक करेगा, होवर करेगा तो क्या चीज़ होगी. सो दिस ऑल लॉजिक इज़ रिटन इन अ लॉजिक डॉक्यूमेंट. फिर आपके पास आते हैं इंटरफेस डेवलपर, जो कि इंटरफेस डिज़ाइनर्स की फोटोशॉप की इमेजेस लेके वो एक्चुअल इंटरफेस दे डिज़ाइन दैट इंटरफेस, ठीक है. पर आपके पास इंटरफेस डेवलपर्स होंगे जो वेब बेस्ड इंटरफेस डेवलपर अलग होंगे. यू बी हैविंग अ डेस्कटॉप इंटरफेस डेवलपर, यू बी हैविंग अ फोन एंड टैबलेट इंटरफेस डेवलपर्स, एंड इन द एंड यू विल बी हैविंग ए कोडर, जो कि एक्चुअली हु इज गोइंग टू राइट द कोड. सो व्हाट द कोडर विल रिसीव द लॉजिक फाइल दैट विल शो कौन से बटन में क्या काम करना है, एंड इंटरफेस एंड लॉजिक. तो कोडर के लिए कितना काम आसान हो जाएगा कि भाई ऑन दिस बटन आई हैव टू अप्लाई दिस लॉजिक, ऑन दिस टेक्स्ट बॉक्स आई हैव टू अप्लाई आउट दिस लॉजिक. सो लॉजिक जो होगी वो एब्स्ट्रैक्ट होगी फॉर सिमिलर फॉर ऑल प्लेटफॉर्म्स ऑलमोस्ट. थोड़ा सा माइनर डिफरेंस हो सकता है बट इट विल बी सिमिलर. कोडर विल बी डिफरेंट एंड इंटरफेस डेवलपर डिफरेंट. सो दिस इज द डिफरेंट लेयर जहाँ पे विच विल कंटेन द लॉजिक, कि कौन से चीज़ पे कौन सी लॉजिक अप्लाई करनी है, जो कि शेयर होगी डिफरेंट कोडर के साथ. सो दिस इज हाउ आई वांटेड टू गिव यू द व्यू कि एक्चुअल सॉफ्टवेयर हाउसेज में एक ही बंदा सारा काम नहीं करो, तो देयर आर डिफरेंट पीपल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग डिफरेंट थिंग्स. ओके. System analysts are the key individuals in the system development process. A system analyst studies the problems and needs of an organization to determine how people, data, processes, communications, and information technology can best accomplish improvements for the business. The system analyst is the key person who will be responsible by gathering the basic requirements in the analysis phase. ठीक है. And determine how people, data, processes किस तरह से कम्युनिकेट होंगी, हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बेस्ट अकम्प्लिश इंप्रूवमेंट्स ऑफ द बिजनेस. तो
अगर आपको याद होगा कि हमने क्लास में शायद ये भी डिस्कस किया होगा कि यू डू नॉट बिकम डायरेक्टली सिस्टम एनालिस्ट। आप पहले जो है वो इन लेवल्स के थ्रू कोडर, इंटरफेस डिज़ाइनर्स, लॉजिक डिज़ाइनर्स, इंटरफेस डेवलपर्स के बाद आप प्रमोट होते होते यू गो अप टुवर्ड्स एनालिस्ट, बिकॉज एनालिस्ट मस्ट नो अबाउट द टेक्नोलॉजी, एनालिस्ट मस्ट नो अबाउट द डिफरेंट इंटरफेसेस, एनालिस्ट मस्ट नो अबाउट द लॉजिक डिज़ाइनर, सो ही इज अ सीनियर पर्सन। एंड आफ्टर द एनालिस्ट यू हैव द प्रोजेक्ट मैनेजर, तो सीनियर एनालिस्ट बिकम द प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। सो एज यू गेट द चांस to become inshallah the software developer, so when you go up to the ladder by climbing from the junior developer to the senior developer, then senior developer to the logic programmers or the project manager or analyst. So analyst can be the project manager and project manager may be the system analyst, but the analyst who become the senior, he'll be promoted to the project manager. So, and I give you an example of another example. There a friend of mine who was working as a system analyst or as a senior software developer in a software house in Karachi. उसके साथ एक और उसका जूनियर जो है वो भी उस कंपनी में जो है हायर हुआ, वो 1-2 साल से जूनियर था, but he also became the system analyst during the course of a time. But the person who was junior, he got promoted at the designation of project manager इन कंपेरिजन टू द सीनियर एनालिस्ट। क्यों इस तरह से? क्यों उस बंदे की मास्टर्स की हुई थी, उस बंदे का एमफिल किया हुआ था, ठीक है। तो दैट क्वालिफिकेशन आल्सो मैटर्स, लाइक इफ अ गाय हु इज एट द सेम स्ट्रक्चर यू या थोड़ा बहुत आपसे सीनियर हो, बट इफ यू डू नॉट क्वालिफाई विथ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो फिर आपके लिए जो ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। सो यू मस्ट कंटिन्यू योर एजुकेशन एज वेल, but decide your education when you are in the market, okay, what kind of masters that you have to do that will benefit to you into your career, okay. So organizational role most responsible for the analysis and design of information systems. So system analyst, there are also several different people categorized as system analyst, business analyst or technology analyst, architecture analyst, etc and etc. So, but the main and more famous guy is called the system analyst, ठीक है, जो को अक्सर आप ऑर्गेनाइजेशन में देखते हो। So system analysis and design, system analysis understanding and specifying detail what an information system should do, and system design specifying detail how the part of the system should be implemented. Analyst what did say कि system को क्या करना चाहिए, system design how वो कैसे perform करेगा, ठीक है, किस तरह से वो चीज़ implement होगी। So definition of system analysis and design, the complex organizational process whereby computer-based information systems are developed and maintained. तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है कि भाई कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरह से डेवलप होंगे और मेंटेन होंगे। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड एंड दिस इज अ कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट, नॉट अ न्यू सब्जेक्ट बट another subject. So in your third semester you are learning about the software engineering principles, but in the fourth semester you will be having two different subjects. एक सब्जेक्ट का नाम होगा सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन और दूसरे सब्जेक्ट का नाम होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो you will learn more about these two, system analysis and design and information system, in detail into different subjects which are focused completely on analysis and design phase and development of information system, especially the issue related to the information systems. So analysis, it is going from requirements to specification, and design is going from specification to implementation. Analysis in this phase, the SDLC, in which the current system is studied and alternative replacement systems are proposed as by gathering the requirement and deciding whether we need a system or not. If you I recall give the example कि भाई एक काजी की शॉप है, एक जो है वो आपके पास जो है वो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है जो कि मैक्स बजट पे चल रहा है। तो मैक्स बजट पे जो बच्चे जो है वो नॉट बच्चे बट द गायज हु आर सिटिंग एट द पॉइंट ऑफ सेल्स locations, when a customer comes with a different list of products in their carts, the guy who's standing at the point of sales location, he scans each and every product, and that price is added into the accumulated bill, and that is paid by the customer.
because there are hundreds and thousands of products at supermarkets. So the guy who's standing there, he cannot she cannot remember the price of each product, and there might be a chance of error for the accumulation of or some of the cost of the products. तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत है. बट if you go to the Qazi shop in front of ISAT, is a very small shop and Qazi remembers each the price of each and every product. तो वहाँ पे if you go to buy a product, तो वहाँ पे जो है कंप्यूटराइज बेस्ड सिस्टम की ज़रूरत नहीं है कि उसको हर चीज़ का पता है. और अगर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हम इंस्टॉल करेंगे तो वो एक एक प्रोडक्ट स्कैन करेगा, इसमें इनपुट करेगा, वो आपको देगा, तो इट विल वेस्ट लॉट्स ऑफ टाइम and increase the cost of the shop, because it will increase the electricity and cost of the maintenance of the software system. तो वहाँ पे जो है हम चेक करेंगे कि वहाँ पे सिस्टम की ज़रूरत है या नहीं है. अगर ज़रूरत है तो किस तरह के जो है वो सिस्टम की ज़रूरत है. अगर लाइट जाती रहती है तो वहाँ पे योर सिस्टम मस्ट बी कैपेबल ऑफ रनिंग ऑन द टैबलेट और PC और टैबलेट और योर मोबाइल फ़ोन एज वेल. So analysis phase, we gather the requirements, discuss about the description of current system that we have studied, what are the issues related to the current system, why we are going to develop a new system, whether the current system exists, if it exists, whether it exists manually or whether it exists the computerized way. So where are the problems and opportunities, or with the general recommendation on how to fix, enhance or replace the current system. To find and fix and enhance, replace the current system, the opportunities, and what are the problems and issues. These will be gathered by the users' requirements or stakeholders of the system. So what are the stakeholders? The stakeholders will be the top management of the company, the managers who are responsible for the different departments for running in the company, and other users at the data entry level who are actually using the system. Even the customers, like for a bank, you are the customers. You can provide the feedback to improve the system, the banking system. So from that you get the opportunity and problems and issues, feedback, recommendation, how you can fix, enhance or even replace the current system. Even we are not going to talk about how we are going to replace the current system with the new one, because there are different strategies कि आप एक सिस्टम उठा के दूसरा सिस्टम immediately उसको replace कर दें, और you run the two system parallel in order to ensure that कि previous system से नया system बेहतर है. और ऐसा ना हो कि भाई नया सिस्टम इंस्टॉल करें और जो है वो सिस्टम क्रैश हो जाए तो हमारे प्रीवियस सिस्टम भी जो है वो उससे भी हाथ उठा ले, तो द कंपनीज गोज डाउन, स्टॉप वर्किंग. तो so we need to think about the deployment strategy as well. We'll discuss about that in this course, or maybe in in your course in the next coming semester. So design phase, in this phase of the SDLC, in which the description of the recommended system solution is converted into the logical and the physical system specification. So logical design, so design phase is decomposed further into the two phases. The first phase is the logical design and the second phase is the physical design, or you can say the two steps. The logical design is a part of the design phase of the SDLC in which all functional features of the system chosen for a development in analysis are described independently of a computer platform. The functional features, I've shown you the functional requirements and non-functional requirements. These are the functional features. They do not depend on the technical aspect point of view or other hardware or a computer platform. So logical design, as we talk about, as the word is self-explanatory, the logical design, okay, bhai, that will be the abstract and that will be independent of any platform. Then we have a physical design. And what is physical design? Physical design is a part of the design phase of the SDLC image, of course, in which the logical specification of system from logical design are transformed into the technology specific details from which all programming and system construction can be accomplished. So in which we talk in detail about the physical parameters, what kind of hardware will be required for the development of system, what kind of programming language that we are going to use, what kind of interface that we are going to use, what kind of different tools that we are going to use, maybe the tools that we already have or the tools that we are going to purchase, what kind of performance issues, the running issues. We will discuss about those in detail. So logical design output consists of functional or detailed specification of all the system elements, include input, output and different processes, how the information is processed into the system, or how the information will be processed into the new system. And physical design output will be the technical and detailed specification of all the system elements, for example programs, files, the network on which the system will run, the system software, and etc. and acquisition plan of a new technology. Acquisition plan of a new technology, for example, system को लेने किस तरह से, not necessarily the new system that we require, we are actually going to develop the system.
Again, I'll give the same example of the point of sale system. For example, Max Purchase at Dawood. Over there, point of sale system or retail system that already exists in the market and that are already developed by the different companies. If you are going to start a new supermarket, you do not need to get the system developed from the scratch. You already have to just go to the company and propose your requirements, and they will provide you the already developed system or customized already developed system. तो उसको दोबारा से बनवाने की जरूरत नहीं है. वाई यू आर गोइंग टू री इन्वेंट द व्हील? तो वो ऑलरेडी बना हुआ, उसको वहाँ से परचेज करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस और सुपर मार्केट. ठीक है. सो एंड इट इज़ अ बेटर वे, बिकॉज वो सिस्टम ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, इस्तेमाल हो रहा है. उसके अंदर जो भी वट एवर एरर्स और बग्स दैट ऑलरेडी केम by its usage by the different supermarkets, they're already fixed. So it will be more stable release rather than you start developing your own system. So acquisition plan of a new technology is related to the acquisition plan of a new system, कि वो शुरू से बनवाना है या पहले से बना हुआ है, जो ऑलरेडी जो आपके पास बना हुआ है उसको मॉडिफाई करना है, क्या करना है. Eventually we have to decide that after this design phase. There are different design issues: data management, access control, control flow, boundary conditions. Data management, how is persistent data handled? किस तरह से होगा? फाइल्स होगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा. फाइल्स मीन्स आप एक्सेल फॉर्मेट में होगा या आपको वर्ड फॉर्मेट में होगा. दिस आल्सो कंटेन डेटा, सो वी कैन कॉल दिस इज द डेटाबेस. और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट यू हैव ऑलरेडी इन द मार्केट. एसक्यूएल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, MySQL is there, or MongoDB is there, Oracle database management system is there, etc. and etc. Access control, how is access control specified and realized? Global access table, access control list capability, how you're going to give authorization to the user, whether you have a central repository or whether you put it locally or at the remote location or at the different devices. So you have to decide what kind of access control you want to give depending on the security of the company. Control flow, how is processing initiated and control? Procedure driven development है, event driven development है, threaded है. As I've told you, there are several programming paradigms. Procedure driven development है, event driven है, agent based है, array based है, etc. etc. कि how is processing initiated and control? क्या processing किस तरह से start करेंगे, उसको कैसे control करेंगे? The boundary conditions, how our system start up, system shut down, exceptions handled if the system crashes. Specify system administration use cases for startup and shutdown. For example, system will be up from Monday to Friday. You can have access to that system जब आप ऑफिस में हो. अगर आप ऑफिस में नहीं हो तो सिस्टम एक्सेस नहीं कर सकते. या if you want to access system, company provides the VPN to access that system from your home or remote location, or even you are able to access it from remote location, but after the Friday, on Saturday or Sunday, you cannot access the system even from remote location. So you have to consider the system administration issues for startup and shutdown, and how you're going to do the backup. Are you going to run the standing databases or replicated databases? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर क्रिटिकल सिस्टम्स, तो आप किस तरह के जो डेटाबेस जो है मेंटेन करोगे. इफ़ आई टेल यू एन एग्जांपल ऑफ सऊदी अरेबिया की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ है कि आप सऊदी अरेबिया में जो है वो एंटर करते हो तो आपके वहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड होती है. जब आप वहाँ से लीव करते हो तो आपकी वहाँ से लीव रिकॉर्ड होती है. हर मुल्क में इस तरह से होता है. अ फ्रेंड ऑफ माइन वाज वर्किंग इन द सऊदी अरेबिया इमिग्रेशन सिस्टम, सो दे टोल्ड देयर आर 3 डिस्टिंक्ट लोकेशंस जहाँ पे सऊदी अरेबिया का इमिग्रेशन डेटाबेस अवेलेबल होता है. एक हमारे पास जद्दा में है, दूसरा रियादा में है. तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही जो है वो बंदा एंटर होता है तो उसका इनपुट आ जाता है कि भाई ये बंदा एंटर हुआ. जैसे बंदा यहाँ से टेक ऑफ कर सऊदी अरेबिया तो उसका आउटपुट चला जाता है. व्हाट हैपेंस इफ द सिस्टम एट जद्दा क्रैशेस? तो क्या होता है, रियादा से अप कर देते हैं. सिस्टम क्रैशेस और रियादा, तो सिस्टम जद्दा से अप हो जाता है. ठीक है, कहीं पे भी क्रैश हो. लेकिन एक जद्दा से भी क्रैश हो जाए या रियादा से भी क्रैश हो तो एक और डिफरेंट, देयर इज अ रिमोट लोकेशन इन द डेजर्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया वेयर द डेटाबेस is maintained. Because if some terrorist attack on the Jeddah airport or Riyadh airport, so what will happen? They will up, or if the both system crashes at Jeddah or Riyadh, then what will happen? They will up the database management system from the remote location. And very few people they know the exact location of the location where the database management system is installed, because
इट इज़ वेरी क्रिटिकल, क्योंकि अगर ये डेटाबेस क्रैश हो गया तो क्या होगा, जो नए बंदे आने वाले हैं सऊदी अरब में इन नहीं हो पाएंगे, जो जाने वाले हैं सऊदी अरब से वो वहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा, तो पता नहीं चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो वो एक लॉकडाउन में चला जाएगा, एक बाउंड्री क्लोज हो जाएंगे सऊदी अरबिया की। ठीक है गाइस, specify an exceptional handling mechanism for error. So you must be learning about exceptional handling in Java या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो भी आप पढ़ रहे होगे, कि अगर एरर आ जाए या अनवांटेड सिचुएशन आ जाए तो किस तरह से उस चीज़ को हैंडल करें। Implementation environment needs to consider the technical and managerial constraints under which a system should be built. What hardware software will the system run on, hardware limitations, system limitation, उसकी जो distribution है, what programming languages will be used, object oriented programming or non object oriented programming, memory management, what existing software do we need to use, database management system, UIMS, network facilities और legacy systems, कि पुराने सिस्टम अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हैं या यूज़ करते हैं। what development people organization will be involved, डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन है या टीम कॉम्पिटेंसीज है, कि डेवलपमेंट किस तरह से होगी, कि टीम्स जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे अवेलेबल हैं, थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ शेयरिंग सॉफ्टवेयर दे यूज फॉर द डेवलपमेंट, और एक जो टीम कॉम्पिटेंसीज है कि वो एक लोकेशन में बैठ के वो काम करेंगे। सिस्टम डिजाइन adopts the logical structure of the analysis model to the implementation environment and prepares for the implementation by considering the impact of non-functional requirements that we already discussed. Considering, तो ये एक थोड़ा सा लुबे लुबाब है सिस्टम डिज़ाइन का, कि वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कंसिडर करेगा। कंसिडरिंग सिस्टम वाइड डिज़ाइन इशूज़, कंसिडरिंग इम्प्लीमेंटेशन एनवायरनमेंट, फुली स्पेसिफाइंग ईच क्लास इंक्लूडिंग ऑल एट्रीब्यूशन ऑपरेशंस। डिज़ाइन के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, ताकि जब वो डेवलपमेंट की तरफ जाए तो डेवलपमेंट की तरफ वहाँ पे देयर वोंट बी एन इशू। डिकम्पोजिंग इम्प्लीमेंटेशन वर्क इनटू मोर मैनेजेबल पीसेस और सब सिस्टम्स। We can decompose the overall system into the different subsystems and give each subsystem as a complete new project to the different teams to work on, and then eventually go for the building the interfaces between those subsystems in order to integrate those subsystems input and output to bring up a large system. When to transition to system design, when minimal changes will be required to transform the analysis model into the design model. What are the design goals? What qualities of system should the developers optimize or focus on? Qualities delivered mainly from non-functional requirements. Selected qualities guide the decision made by developers, especially when trade-offs are needed. Trade-off का मतलब है कि कहाँ पे compromise करना है, कौन सी non-functional requirements की, या हम performance को ऊपर जाएँ तो security को कम रखें, या हम security को बढ़ा दें तो performance को कम रखें. So you need to make a decision to make a trade-off. कहीं ना कहीं पे हमें जो है वो adjust करनी पड़ेंगी, ताकि एक average level पे जो है वो the things come on. Usually only a small subset of the non-functional requirements can be considered simultaneously. कि non-functional requirements की जो है small subset consider किया जाएगा simultaneously, not at the same time. Need to prioritize design goals and possibly develop trade-off against each other as well as against managerial goals. Prioritize what kind of issues, what kind of features that we need to get it developed at the priority basis, depending on the requirements of the managerial goals. Because eventually जो कि गोल क्या होता है, योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और द कॉस्ट मिनिमाइजेशन। सिस्टम अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर रहा, इट इज़ ऑफ नो यूज़, और इफ इट इज़ नॉट मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, इट इज़ ऑफ नो यूज़। सेम एग्जांपल, काजी के लिए वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर रहा, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़ ऑफ अ काजी शॉप, बट फॉर द सुपर मार्केट्स दैट सेम सिस्टम इज reducing the time, eventually serving more customers in the meantime, so profit maximization. Yeah, even those organizations like universities who are non-profit organization, over there the system will also increase or reduce the costs. Let me give you an example of it. Initially आपकी जो attendance है वो क्या मैनेज होती थी, each teacher जो खुद मैनेज करता था वो उसको attendance system पे input करता था, and after that आपकी जो सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म्स, एग्जामिनेशन से एक टीम आती थी जो कि अटेंडेंस पुट करती थी एक एक फॉर्म के ऊपर चेक करके, फिर जो है वो स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता कि अगर 40% अटेंडेंस है या 50% अटेंडेंस है या 60% अटेंडेंस, तो उसको अलाउ किया जाता था. बट फ्रॉम लास्ट ईयर दैट अटेंडेंस सिस्टम इज इंटीग्रेटेड विद एग्जामिनेशन सिस्टम, सो अटेंडेंस इज ऑलरेडी पुट इट ऑन द एडमिशन फॉर्म. सो द टीम दैट यूज्ड टू कम, अब वो नहीं आती, अब क्योंकि अब वो शुरू में आती तो देयर आर
thousands of students studying in the university. उनके लिए उस टीम को जो है बहुत अर्से पहले काम स्टार्ट करना पड़ता था, and university had to pay to them to do that work, to pay to them extra to do that work, and it have caused several errors and bugs as well. Human है तो गलती तो हो सकती है, तो किसी अटेंडेंस किसी और पे ऊपर लग गई, तो आफ्टर द इंटीग्रेशन क्या होगा, वो कॉस्ट रिड्यूस हो गई जो लोग जाते थे काम करने के लिए, एंड सिस्टम इम्प्रूव हो गया, एरर्स और बग्स वो रिड्यूस हो गए. ठीक है, सो वी नीड टू कंसिडर दिस मैनेजमेंट गोल्स फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन. वेल ट्राइड वेज टू हैंडल कॉमन रिक्वायरमेंट्स आपके डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं. नेम्ड वेल अंडरस्टूड सोल्यूशन टू कॉमन प्रॉब्लम इन कॉन्टेक्स्ट help novices to learn by example to behave more like experts. Pattern catalog documents particular design that are useful in certain contexts. So for the development you already have a design patterns. So in the design phase you can choose कौन से design patterns जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अब design patterns जो है which is not part of your course, you might be having a subject related to the design pattern. So there are several design patterns. इस भी एक document है जो कि मैंने डाउनलोड किया था. It contain you have observer design pattern जो कि आपको एक लॉजिक इंप्लीमेंट करता है. you have a mediator design pattern, you have observer versus mediator, you have a visitor design pattern, you have abstract design pattern. There are several, I think almost 18 to 20 design patterns. Design pattern actually depicts the way of doing some implementing some business logic that usually get lots of lines of code implement, जो कि वो जल्दी से implement हो जाता है अगर आप उसको डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करें, और इट विल इंक्रीज द परफॉर्मेंस. तो पहले ही रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने डिज़ाइन पैटर्न्स प्रपोज कर दिए, तो हम ये चूज कर सकते हैं which kind of design pattern that we can use for the implementing of a particular issue. A framework, a reusable chunk of architecture, describes how a collection of objects work together to implement the structural part of the design pattern. Usually define generic classes that describe the collaboration between the objects and which will be subclass specialized when the framework is applied to a problem. A framework, you have a .NET framework, you have a Java framework, or even for the enterprise system, you have different already frameworks implemented. For example, enterprise resource planning system like आपके SAP आपके पास अवेलेबल है, Microsoft का जो आपके पास अवेलेबल है Microsoft बिजनेस के हवाले से, तो ऑलरेडी उनके पास बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट की हुई है, तो वहाँ से भी आप उसको उठा के जो है वो ERPs को उठा के उसको कस्टमाइज करके जो है अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं. यहाँ .NET और जावा फ्रेमवर्क है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं. जिस तरह आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, आपके पास बटन, तो वो आपको रिक्रिएट नहीं करने हैं, यू जस्ट टू ड्रैग एंड ड्रॉप. ठीक है, तो वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि ईज आउट करेंगे इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न ऑफ द स्ट्रक्चरल पार्ट. Each class becomes a table. Design patterns objects into tables. Each class becomes a table. जो class है वो table में convert हो जाएगी in form of database. Each primitive attribute becomes a table column. Primary key column will be as object ID not visible to user. Each object in a row is in the table. Each association between classes, one-to-one association, one-to-many association, and many-to-many association. तो ये आप डेटाबेस में जो है कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे कि ये एसोसिएशन जो है वो किस तरह की होती है. And inheritance, place all subclass attributes into the superclass, या place all subclass attributes superclass attributes into the each subclass, या create a separate table for superclass and relate to subclass. So you can choose what kind of inheritance property that you want to use to propose for from the design point of view. So artifacts and workers. Let's discuss about the artifacts and workers. So there are three major workers: architect, use case engineer, and component engineer. And architect works on the design model, the deployment model, and the architecture description. Use case engineer works on the use case realization design, and the component engineer works on design class, design subsystem, and interfaces. These three workers are not necessarily three different people, but these are the three designations. So maybe all of these things are performed by the single person or more than even the three persons together. Okay, so let's now understand more about these artifacts in detail. So what is the design model? It describes the physical realization of use case, focuses on how functional and non-functional requirements together with the implementation environment constraints impact the system. Constraints means जो उसको लिमिट कर दे
ठीक है. Deployment model describes the physical distribution of the systems in terms of how functionality is distributed among computational nodes. ठीक है, कि किस तरह से हमारी जो है उस डिफरेंट सिस्टम्स के जो है फंक्शनलिटी जो है डिफरेंट कंप्यूटेशन नोड्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है. फॉर एग्जांपल अगर हम आगे चल के देखें, सो वी हैव दिस डिप्लॉयमेंट मॉडल. तो हमें यहाँ पे कंट्रोल पैनल दिख रहा है, यहाँ पे हमें जो है वो CPI सर्वर यहाँ पे दिख रहा है, हमें जो है पर्सनल कंप्यूटर दिख रहा है. पर्सनल कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स है, सिक्योरिटी है, सर्विलेंस है, ठीक है, कम्युनिकेशन. तो दिस इज दिस मॉडल डिपिक्ट्स दिस द डिप्लॉयमेंट model, an example of the deployment model. ठीक है. Architecture description contains the architecturally significant artifacts of the design model and all of the deployment model. So two views of architecture, design model view and deployment model view. तो हम वहाँ पे जो deployment model view जो हम देख चुके हैं, there must be some design model view. Interface design यहाँ पे available नहीं है, so मे बी मिस हो गया मेरे से थोड़ा सा ये. ठीक है. ओके, यूज़ केस रियलाइजेशन डिज़ाइन जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूज़ केस जो है वो इंजीनियर की. It describes how a specific use case is realized and performed in terms of design classes and their objects. ठीक है. What is a use case? This is an example of a use case. So in this is the textual format of the use case, and there are normally two representation of use cases. One is the textual format, another is the use case diagram. So this is a use case diagram in which we have different actors: management, doctor, patient. This is an example of the patient doctor management system, which contain different use cases: make an appointment, produce schedule information, record availability. And this is an external entity. This is the relationship between a use case and an external entity. Use case is represented by an oval sign, and then this rectangle is a boundary. So there are four components: an actor, association, use case itself, and the boundary. This is the use case diagram, and this is the use case scenario in a textual format, which is in more detail, which comprises of different elements like use case name, actor, description, preconditions, normal course, alternative course, post condition, exceptions. So this is a more in detail format. Design subsystem organizes artifacts of the design model into more manageable pieces. कि पूरे एक सिस्टम को डिकम्पोज करते हैं मुख्तलिफ सब सिस्टम्स के अंदर, ताकि आपस में फिर आप डिज़ाइन बना के उसको दोबारा से आप इंटीग्रेट कर सकें. Interface specifies the operations provided by design class and subsystem. It separates operations from their implementation. Different workers जो है, architect क्या होता है, responsible for the integrity and architecture of the design and deployment models. Use case engineer क्या करता है, responsible for one or more use case realization design. तो यूज़ केस जो है वो डिज़ाइन करते हैं. मेक्स ऑल टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम डिस्क्राइबिंग द यूज़ के रिलेशन रीडेबल एंड सूटेड फॉर दिस पर्पस. उसके अंदर जो हर यूज़ केस की अपनी एक नाम होता है, उसका इट इज़ द डिफरेंट यूनिक आईडी. उसकी जो प्री कंडीशंस होती हैं बिफोर दिस यूज़ केस, उसकी प्री कंडीशंस कौन सी होंगी, एंड ड्यूरिंग दिस यूज़ केस कौन सा नॉर्मल कोर्स होगा जब विल बी सक्सेसफुली कंप्लीटेड. अगर अल्टरनेटिव कोर्स होगा कि अगर नॉर्मल कोर्स नहीं है तो दूसरा अल्टरनेटिव कोर्सेज कौन से हैं, कि दूसरी ब्रांचेस कौन सी हैं, और एक्सेप्शंस होंगे. इफ ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन, अगर ड्यूरिंग यूजेज ऑफ सिस्टम इज समथिंग गोज रॉन्ग इस यूज़ केस के दरमियान, तो फिर उससे जो है वो क्या होगा. एवरी यूज़ केस कंटेंस एवरी यूज़ केस प्री कंडीशन पोस्ट कैन कंटेन लिस्ट ऑफ स्टेप्स एंड ईच लिस्ट ऑफ स्टेप कंटेन्स सम डिफरेंट इंफॉर्मेशन कंसिडर. ओके. Component engineer defines and maintains. You might will learn more about these use cases in, I think, into the second semester of the second year, जो आपके system analysis and design और information system दोनों subject में कहीं पे जो है वो learn about these use cases in detail. So defines and maintains operations, methods, and but I wanted to give you a view what kind of use cases, how use cases look like, because they are very much in use. They are extremely used in the and the software houses. So component engineer defines and maintains operations, methods, attributes, relationships, and implementation of one or more design classes. May also maintain the integrity of one or more subsystems. So what are the different elements that are part of the design model?
उसके अंदर डेटा मॉडल्स होंगे, जिसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे, डेटाबेस आर्किटेक्चर होगा, डेटा स्ट्रक्चर यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट डेटा स्ट्रक्चर, आपके जो स्टैक्स हैं, आपके जो क्यूज़ हैं, आपके लिंक लिस्ट हैं। आर्किटेक्चर एलिमेंट्स होंगे, एप्लीकेशन डोमेन होगा, एनालिसिस डोमेन होगा। एप्लीकेशन डोमेन की कौन सी एप्लीकेशन है, आपका जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल है, आपके बिजनेस है, आपको एजुकेशन है, बैंकिंग सेक्टर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनालिसिस क्लासेस, देयर रिलेशनशिप्स, देयर कोलैबोरेशंस एंड बिहेवियर्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू दिस डिज़ाइन रियलाइजेशन। इंटरफेस एलिमेंट्स, आपकी यूजर इंटरफेस होगा, एक्सटर्नल इंटरफेस टू अदर सिस्टम, हाउ दिस सिस्टम विल बी इंटरेक्टिंग विद अदर सिस्टम, डिवाइसेस, नेटवर्क्स और अदर प्रोड्यूसर्स और कंजप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अदर सिस्टम फॉर एग्जांपल एक बैंक का अपना एक सिस्टम है, उसके अंदर अपने कस्टमर्स हैं, लेकिन उसका जो है वो सिस्टम कैसे दूसरे बैंक के बैंकिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि आप जब अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो एकदम से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन हर बैंक का अपना एक यूनिक और जो है वो सीक्रेट डेटाबेस होता है, जिसके अंदर उसके अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन होती है, उसके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट शेयर्ड विद द अदर बैंक्स। तो वी मस्ट दे मस्ट हैव डिफरेंट इंटरफेस जो कि आपस में दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सिमिलर वे आपकी जो टीम मशीन, तो कोई भी टीम मशीन में आप चले जाए, आप वट एवर द बैंक कार्ड दैट यू आर यूजिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, तो वहाँ से आप पैसे रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। तो बिकॉज दिस सिस्टम्स आर समहाउ इंटीग्रेट विद दीज इंटरफेसेस। आपके पास कंपोनेंट एलिमेंट्स होते हैं, आपके पास जो डिप्लॉयमेंट एलिमेंट्स होते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे लिस्टेड कर चुका हूँ। दीज आर द इंटरफेस एलिमेंट्स, कि भाई कंट्रोल एलिमेंट है, कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल डिस्प्ले एलईडी इंडिकेटर्स, कीपैड कैरेक्टरिस्टिक्स, वायरलेस इंटरफेसेस, यू हैव वायरलेस पीडीए, यू हैव मोबाइल फोन्स, वी हैव कीपैड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके पास कंपोनेंट एलिमेंट्स है, सेंसर मैनेजमेंट है, आपके पास सेंसर है, देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम दैट यू नीड टू इलस्ट्रेट, deployment elements that you are already aware of, and eventually the analysis and the design. The difference between the analysis and design model: the analysis model is more of a conceptual model, a design model is more of a physical model. Analysis model is the design is the generic, and design is related to the implementation specific. Analysis is less formal and design is more formal in terms of the technical point of view. Analysis is less expensive to develop, design is more expensive to develop. Analysis has a few layers, design has many layers. Analysis focus on interactions and design focus on sequences of information or flow of the information. Analysis outline the design, and design is the implementation of the design. Analysis is created by developer meetings and design is created by software engineering environment. So analysis is created by developer meetings, questions, interview, joint application development, and design is created by software engineering environments within the software house, whether that is inside or outside the external to the company. Analysis may not be maintained because it is already done, we understood everything. After the delivery of the system, design is maintained throughout the cycle but not the analysis. See, because analysis has already been transformed into the design, so we do not need to contain analysis again, we need to focus on the design. So these are the different differences between analysis and design. There is another slide that was missing in previously. These are different design codes. For example, performance criteria, what kind of response time will be when we execute a particular task of the system, what is the throughput, what is the memory that it will use, the maintenance criteria, the extensibility, how it will be extended, modifiability, whether it will be modifiable or not, the existing feature, adaptability, whether it will be adaptable to the new version. For example, if we move to same system to the new version of the Windows, or provide new updates to this version. Portability, if you can use this system on different portable devices, like if you can use the system on your mobile phones, smart watches or tablets or etc etc. Readability, whether it will maintain the readability, dependability criteria, robustness, reliability. Reliability means whatever the output or behavior of the system that it provide, it should be reliable, there should not be an error. Availability, whatever happens, whatever if crashes, light goes on, whatever something else, the system should be available. Fault tolerance, if something goes wrong, system should have an exception handling mechanism to prevent that fault. It should be secure in order to prevent the malware, in order to prevent the unauthorized access to the system. It should be safe. Cost criteria, the development of the cost development, the deployment cost, the upgrade cost, the maintenance cost, the administration cost, the traceability cost, everything will be should be mentioned. And end user criteria, utility, because end user will be using it, so how usability is, how it will is that how efficiently it performs, or
how efficiently it fulfills the goals of that particular user. These are the design goals that need to be achieved after the completion of the system. So we need to prepare the design models with respect to the all of these criteria. So this is the end of the lecture. Hope that you've understood the concepts, and inshallah see you soon with the next coming lecture. Thank you.